Good morning, team. Airtel hikes price of minimum monthly prepaid recharge plan. It was previously 99 rupees to 115 rupees. Now the plan has been made it to 155 in 7 circles. Previously in 2 circles, they have done it as a pilot project. It was in Odisha and Haryana. And now another 7 circles have been enhanced. So it will increase their ARPU, but it will be a minor 1% improvement in their net profit. But this is very positive for Airtel. And the related news, one is there, Indus Tower has posted a consolidated loss of 708 crores. The company made a doubtful provision for 2,298 crores. This is because of Vodafone Idea. So why I'm saying this is now it is very clear that Idea is not able to pay even their tower companies. So sustainability will be very difficult, and it will become mostly 2 players, Jio and Bharti Airtel, which is very positive for Bharti Airtel, and the pricing power might come very aggressively. Tata Motor is looking to minimize discount in truck segment. This has been an industry practice for almost 30 years. So whenever truck sales are not up to the mark, there used to be huge discount. So those days it used to be Ashok Leyland and Tata Motors. Now you have few more players, but Tata Motor has said that we will not do this practice anymore. It has been eroding their margins. So this is very positive for Tata Motor, which is the largest in CV, commercial vehicles, and followed by Ashok Leyland. But you have Eicher Motor and Mahindra also in mini LCV space. So that also would have some benefit. IOC said it would invest 2,200 crores investment for projects in Tamil Nadu in the next 2 years. There are multiple projects they have talked about. So this is positive for IOC. But in this space, we like Hind Petro more. I think there the valuation is very attractive. SBI card total reported result. The total income increased by 16% at 3,656 crores. Net interest income higher by 26%. That is 1,609 crores. Cost of fund has increased. Previously the cost of fund was 5.4%. It has increased to 6.3%, which is slightly negative, whereas their profit after tax increased by 32% to 509 crores. This is due to lower provisioning. So that is why their profit has jumped very good. But I think the cost of funds increasing will have some impact. But I think yesterday itself the stock reacted. But any correction in the stock would be an opportunity to buy, because they are growing more aggressive than the leader, which is HDFC credit card. Very interesting report came. Fast-tag collection hit 50,855 crores in 2022, which is higher by 46% year-on-year basis. So last year, government in the budget has provided for 2 lakh crore for National Highway Authority, but this 50,000 crores make it 2,50,000 crores of development. So this is very important. So I think next year we expect another 30 to 35% growth in this fast-tag collection. Loda announced pre-sale numbers. Loda said that the pre-sale numbers were 16% higher at 3,035 crores, and they have reduced debt by 753 crores at now the debt is 8,042 crores, and company has added 4 new projects across MMR and Pune, which will have a combined saleable worth of 8,500 crores, and their revenue was down by 14% at 1,775 crores. Profit after tax was higher by 6% at 296 crores. But we need to understand in real estate, we need to take it full year basis. Quarterly results will not help. Their pre-sales number is very important. What is the cash inflow is very important, because when you want to take revenue,
you need to have OC, no objection certificate from the authorities after selling. Then only you can take it as revenue. Car trade reported highest ever quarter of 115 crores, higher by 23%. Profit after tax was 14 crores. So not great, but they have cash in their balance sheet of 1,000 crores. So cash in the balance sheet is one big comfort, but I'm not too comfortable with this new tech company. Number of listings which they have made in the quarter is 268,506 listings they had. PNB Housing also came with the results. Results were better than expected. UCO Bank also, they came with the results. Now their profit almost doubled to 653 crores versus 310 crores. Coffee Day has been fined by SEBI for 26 crores. We have a avoid rating on Coffee Day. Parag Milk revenue came higher by 36% at 735 crores. Profit after tax down by 51%. They own this Govardhan Go Pride of Cow brand. There is in the last news, many of the IT stocks are recovering, but the con call data says the commentary from Coforge has been very good. So any correction in a Coforge would be a good opportunity to buy. And Sonata Software also, the commentary was very good. That also will boost most of the IT stocks. So IT stocks will be in action. Pidilite has a very bad results. So there, I think there will be a negative reaction. With that, over to you, Hitendra. थैंक यू सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं एयरटेल से। एयरटेल ने पहले 200 सर्कल में प्राइस हाइक की थी जो कि 99 से 115 की। अभी उन्होंने बाकी के 700 सर्कल से भी प्राइस हाइक कर दी जो कि पहले 99 से अभी 155 कर दिए। इससे ये बेटर देगा, इनका थोड़ा सा आरओ में इंप्रूवमेंट होगा, तो जो कि ऑल द वे अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट में 1% से इंप्रूवमेंट हो सकता है। सो एक ये ओवरऑल एक पॉजिटिव न्यूज रहेगा एयरटेल के स्टॉक के लिए। थोड़ा सा सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज है। इंडस टावर ने लॉस रिपोर्ट किया 708 करोड़ का। बेसिकली उनको जो डाउटफुल प्रोविजन है 2200 करोड़ का वोडाफोन आइडिया का जो कि टावर का पेमेंट रहता है, लीज पेमेंट, उसके लिए उन्होंने ये प्रोविजन क्रिएट किया। तो जैसे हम देख रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया अभी अपने जो टावर्स के लिए पेमेंट नहीं कर पा रही है, तो आगे सस्टेनेबिलिटी थोड़ी वीक दिख रही है। तो इसी स्पेस में अभी जैसे जियो और भारतीय एयरटेल अभी जो डुओपोली हो सकता है और आगे इनके पास प्राइसिंग पावर आ सकती है। सो हमें आगे फोकस भारतीय एयरटेल पे रहना चाहिए जिसका फ्यूचर आगे हमें लगता है ब्राइट है। सेकेंडली टाटा मोटर्स ने भी कहा कि वे अभी पहले जो ट्रक्स के ऊपर अगर जैसे इनकी ट्रक सेलिंग होती थी तो वो डिस्काउंट्स करके उसको सेल करते थे, तो वो स्टॉप कर रहे हैं। और इस क्योंकि उसके वजह से मार्जिन पे भी इम्पैक्ट आता था। सो एक ओवरऑल की बेटर न्यूज है। और सी सेगमेंट में देखेंगे तो अशोक लेलैंड, आयशर मोटर्स और महिंद्रा महिंद्रा, सो ये सब प्लेयर्स भी आ गए हैं, तो उसे भी डिस्करेज करना चाहता है। आयुषी ने कहा कि तमिलनाडु में वो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे 2200 करोड़ का अगले 2 साल के लिए। इसी स्पेस में देखना चाहेंगे तो हिंड पेट्रो हमें वैल्यूएशन वाइज बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। एसबीआई कार्ड्स के भी नतीजे देखेंगे। रेवेन्यू देखा जाए 16% से ग्रो हुआ गया है जो कि 3356 करोड़ है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखा जाए तो 1609 करोड़ के आसपास का है। पर कॉस्ट ऑफ फंड्स में थोड़ा सा जम देखा जाएगा जो कि 5.6 से 6.3, ये कि नेगेटिव फैक्टर रहेगा, ओवरऑल नेगेटिव रहेगा। बट अगर रिजल्ट देखे जाए तो अच्छे थे। पैट देखा जाए तो 32% से ग्रो हुआ जो कि 509 करोड़ का है। और लोअर प्रोविजनिंग के चलते पैट में जम देखा। अगर हमें इसके चलते थोड़ा सा डिप मिलता है तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को बाय करना चाहिए। नेक्स्ट फास्टैग का डेटा है। फास्टैग में देखा जाए तो 50,855 करोड़ के आसपास का था 2022 में कलेक्शन, जो कि 46% जम देखा गया। बजट में कहा गया था अप्रोक्सीमेटली 2 लाख करोड़ का है, तो 2.5 लाख करोड़ के आसपास का हो गया जो कि, और हमें लगता है आगे 30 से 35% अगले साल के लिए भी ग्रोथ दिख सकती है। लोडा की भी प्री सेल नंबर देखेंगे 16% का जम देखा गया जो कि 3335 करोड़ का है। और हम देख रहे हैं जैसे डेट भी इन्होंने रिड्यूस किया है 753 करोड़ से, जो कि अभी 8000 करोड़ के आसपास का है। इनके 4 नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं पुणे और एमएमआर रीजन में।
और उससे रेवेन्यू देखा जाए तो 8,500 करोड़ के आसपास का आ रहा है। रेवेन्यू देख रहे तो 14% का भी डाउन मिला गया है और पैट 296 करोड़ का है। लोढ़ा या रियल एस्टेट स्टॉक्स हमें फुल ईयर बेसिस पे देखना चाहिए, क्वार्टरली भी नहीं, क्योंकि बेसिकली इनका रेवेन्यू जब होता है जब इन्हें ओसी मिलती है अथॉरिटी से, जब तक ओसी नहीं आती तो वैसे अपने रेवेन्यू में काउंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ट रेट की भी डेटा है। कार्ट रेट ने देखा था रेवेन्यू 115 करोड़ का था जो कि 15% का जंप देखा गया। पैट 14 करोड़ के आसपास का था। इस कंपनी के पास कैश भी है 1,000 करोड़ का, बट ओवरऑल की टेक बेस्ड कंपनी तो हम उससे थोड़ा हमारा रुझान उसका कम है। और इनकी लिस्टिंग देखी जाए तो 2,68,000 की इस बार लिस्टिंग से निकली। रिजल्ट स्पेस में देखें तो पीएनबी हाउसिंग के भी नतीजे बहुत ही अच्छे थे। यूको बैंक के भी नतीजे है। पैट देखा जाए तो ऑलमोस्ट डबल देखा गया, 310 करोड़ से 650 करोड़ तक देखा गया है। कॉफी डी को सेबी ने फाइन किया गया है, फाइन किया गया, तो इसे अवॉइड ही करना चाहिए सब स्टॉक्स को। और आईटी स्टॉक्स में भी रिकवरी दिख रही। हमने उनकी मैनेजमेंट कमेंट्री सुनी है कॉनकॉल्स में, तो हमें दो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, जैसे कोफोर्ज की कमेंट्री और मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस बहुत ही अच्छा है। सेकेंडली सोनाटा सॉफ्टवेयर, ये जैसे स्टॉक्स पे हमें फोकस रखना चाहिए। पीडीलाइट के भी नतीजे डीआरटी खराब है। मारुति की भी रिजल्ट देखिएगा, रिजल्ट ठीक थे और हमारे एस्टिमेट्स के सारे पैरामीटर्स के ऊपर थे। अगर हम ऑर्डर देख रहे हैं तो 3,63,000 व्हीकल्स के ऑर्डर देखे उसमें से 1,19,000 की करंट नई जो लॉन्चेस है उसमें से देखी। और मारुति को ये लगता है कि वो अभी थोड़े समय में अपनी जो लीडरशिप पोजीशन एसयूवी सेगमेंट में FY25 तक ले सकती है और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक वहां से उन्हें लगता आ सकता है। सो हमने पैट और केकर को 12 और 24% के हिसाब से ग्रो किया गया है और करंटली हमारी इसकी बाय रेटिंग है 1099 के प्राइस टारगेट के साथ। टीवीएस मोटर्स के भी नतीजे देखेंगे। रेवेन्यू ग्रो हुआ 14% से स्लाइटली है स्ट्रीट के एस्टिमेट्स के ऊपर, बट प्रॉफिट में हमें शार्प डिक्लाइन देखा गया 13% का क्यूओक्यू के, जो कि हमारे एस्टिमेट से लोअर थे। कंपनी में रिपोर्ट किया जो एबिटा है वो डबल डिजिट मार्जिन में था, जो कि 6 टाइम इन लास्ट क्वार्टर से, जो कि बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। मैनेजमेंट कमेंट्री ने भी कहा कि जो टू व्हीलर डोमेस्टिक मार्केट है थोड़ी सी अभी सुधर रही है और प्रोस्पेक्ट बेटर हो रहे हैं। सो वो थोड़ा एग्रेसिवली अभी जा रहे हैं। ईवी सेगमेंट में जो इनकी IQ मॉडल है उसका भी हमें प्रेजेंस अच्छा दिख रहा है ओवरऑल सिटीज में, और भी नए मॉडल भी लॉन्चेस कर सकते हैं। सो हमने हमारे पैट और CAGR को 14 और 28% से ही ग्रो करते हुए रखा गया है और करेंटली इसके ऊपर हमारी होल्ड रेटिंग है 1110 प्राइस टारगेट के साथ। सोनोकॉम स्टॉक्स के भी नतीजे देखे जाए तो इनलाइन थे हमारे स्ट्रीट्स और एस्टिमेट के से। सेल्स में ग्रोथ रिलेटिवली हमें बेटर दिखेगी क्योंकि रिकवरी की मार्केट जो कि इसका यूरोप और नॉर्थ अमेरिका रीजन है। सेकेंडली ड्यूरिंग द क्वार्टर इन्हें 42 करोड़ का नया ऑर्डर मिला गया है, जो कि ऑर्डर बुक का 64% से 73% हो गया है और इसकी टोटल ऑर्डर बुक देखा जाए तो 23,000 करोड़ के आसपास का है। सिग्निफिकेंट ईवी प्रोग्राम से भी इन्हें अच्छी नहीं वैल्यू अनलॉकिंग दिखेगी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल और जो कि इलेक्ट्रिक एसयूवीज और पिकअप ट्रक में मिलता है। तो सोनागांव हमें लगता है फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट बन सकता है, ऑटो बेस एंसिलरी में है। तो इसलिए हमें हमारा जो पैट सीरीज है 31 और 30% से 23 से 25 में मेंटेन रखते हुए प्राइस टारगेट 661 के साथ बाय रेटिंग है। नेक्स्ट सुप्रीम इंडस्ट्रीज के भी नतीजे देखेंगे। नतीजे एक्सपेक्टेशंस में सभी फ्रंट्स पे अच्छे थे। कंपनी ने टोटल 1,38,362 मेट्रिक टन का प्लास्टिक सेल किया गया, जो कि ग्रोथ देखे जाए तो 51% के आसपास का है, बट जबकि प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी इम्पैक्ट हुई क्योंकि जो पीवीसी प्राइसेस के फॉल दिखेंगे नवंबर 22 के बाद और दिसंबर में भी थोड़े से अपर ट्रेंड में जाते हुए दिखे। ओवरऑल अगर हम सेल्स देख रहे हैं जो कि वैल्यूएटेड प्रोडक्ट्स है जो कि 826 करोड़ का है, जो कि 24% ग्रो हुआ YOY पे। मैनेजमेंट ने कहा है कि वो एक 700 करोड़ का कैपेक्स भी करेंगे 2022-23 में। सो अभी करंटली हमारी इसके ऊपर होल्ड रेटिंग है 2416 के प्राइस टारगेट के साथ। शैली होटल्स के भी नतीजे देखेंगे। नतीजे अगर देखें तो इनलाइन थे हमारे स्ट्रीट और एस्टिमेट्स के साथ, और इसमें जो एक वन ऑफ आइटम था जिसने पैट को बूस्ट कर दिया था और हमारे फोकस के लिए भी आगे चला गया था, इसमें जो उनका जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है जो कि एडिया फ्रंट में जो कि 10,168 करोड़ का है, ऑक्यूपेंसी भी हायर देखी गई है और एरिया लेट टू देखा गया तो 18% सिक्वेंशियल ग्रोथ देखा गया है और नेट सेल्स इंक्रीज हुई है 76.5%, जो कि 289 करोड़ के आसपास का, जबकि एबिटा देखा जाए तो 113 करोड़ का है, जो कि 80% हायर है। और अगर प्रॉफिट देखा जाए तो 102 करोड़ का प्रॉफिट है, जबकि इन्होंने 14 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में। सो हमारी इंटरेक्शन हुई है मैनेजमेंट के साथ और करंटली हमारे इसके ऊपर अपग्रेड करके हमने इसको होल्ड से बाय में कर दिया है 450 से 405 से प्राइस टारगेट भी चेंज कर दिया 450 कर दिया गया है।
और बाकी न्यूज में देखे जाएंगे तो सोनाटा सॉफ्ट ने अनाउंस किया जो इनके करंट सीईओ है मिस्टर समीर सर वो अभी एमडी बन गए हैं और ये रिप्लेस करेंगे श्रीकर रेड्डी जी को। और श्रीकर रेड्डी जी देखा जाए तो 25 ईयर्स एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट थे वर्चूसा मैनेजिंग इंडस्ट्रीज की जो कि $1.6 की कंपनी है। सो ये कि ओवरऑल अच्छी बेटर न्यूज है इस कंपनी के लिए। सो जीएसडब्ल्यू स्टील की जो सब्सिडरी है जीएसडब्ल्यू कोटेड प्रोडक्ट्स उन्होंने भी एग्रीमेंट साइन किया है जो कि 31% एक्वायर करेंगे स्टार्टअप एरिना इनोवेशन में जो कि होम फर्निशिंग और डेको स्पेस में है। Start with the derivative and technical update. On the technical front, if we see Nifty open on a strong note yesterday, but witnesses selling pressure from its day high and close in the red. Technically now 20 January low 18,016 levels is the important levels to watch out. So today monthly expiry is there, so we maintain a cautious view. If we see on the sectorial front, PSU Bank and Reality and Pharma yesterday closed in the red, while IT and sector closed in the green side. Now index immediate trading range is between 18,200 levels and 18,000 levels for the lower side. Now Bank Nifty front, yesterday Bank Nifty also witnesses selling pressure and has a form of bearish engulfing candlestick pattern near 50 SMA levels. So now for the today is the expiry is there. So we feel that expiry will looking for the lower side. For the Nifty, 18,000 and 18,050 levels for expiry, and Bank Nifty is of 42,500 levels. So on the derivative front, both the indices witness a long unwinding, so which also suggesting a cautious view. If we witness a Nifty future, witness a long unwinding of around minus 0.04%, which is a reduction of minus 4.9 thousand shares. And PCR also decreased from 0.94 to 0.81. So which is also suggesting a weakness. So 18,200 call has seen the most OI. 3.10 million shares and 18,300 call with 2.39 million shares, while 17,900 put with 1.61 million shares and 18,000 put with 1.36 million shares. Even Bank Nifty also witnessed a long unwinding of around minus 5.57%, which is a decrease of minus 1.35k lakh shares. For the Bank Nifty also, PCR is decreased from 0.95 to 0.75. And major OI was seen in 43,100 call by 1.32 million shares and 42,900 call by 1.25 million shares. If we see on the put option front, 42,500 put by 0.55 million and 42,600 put by 0.45 million shares. And now if we see the rollover data, rollover for the Nifty stood at 50.57%. Last expiry is 79%, and rollover for the Bank Nifty is stood at 62% versus last expiry is 86%. If you see the FI front, FI is a continuous buying for the last 3 days, but the market is still in a range bound, market trading in a range bound. So yesterday FI added a longs by positive 5,748 contracts, net positive by 23,507 contracts. So overall long short ratio is a 58%. On the cash segment, FI sold 760.51 crore and DI bought 1,144.75 crore. If we today in the expiry, if we witness a selling pressure, metal stocks will be seen also the more selling pressure. So metal stock to watch out. So that's it from my end. Now I'll hand over to Bunty sir for further research update. Thank you and over to you, sir. Thank you, Kshitija. Good morning, team. Good morning, sir. Few updates from my side. As the result season continues, so starting with few results. So firstly on the Maruti. Maruti has reported better than street estimates numbers across the parameters.
Company has said that there is a pending customer orders which stood at around 3,63,000 vehicles at the end of December 2022, out of which about 19,000 orders were for newly launched models. Shortage of electronic components impacted production by about 46,000 vehicles this quarter. Going forward, company aims to achieve leadership position in SUV segment by FY25 on the back of new launches and strong order book. Hence, we have built-in revenue and PAT CAGR of around 12 and 24% over FY23 to 25 respectively. We remain very much positive on Maruti Suzuki and revise the rating to buy with a target price of 10,099. Secondly, TVS has reported revenue growth of around 14% sequential basis, that is Q on Q, which is slightly above the street estimates, whereas profit has declined by 13% Q on Q, which was lower than the estimates. The company has reported double-digit EBITDA margin sixth time in last 6 quarters, which is quite commendable. Management commentary about growth prospects in domestic two-wheeler market was encouraging. At the same time, aggressive plans in the EV segment with new launches and new initiatives in export markets were highly impressive. We built a revenue and PAT CAGR of 14% and 28% over next 2 years respectively. We understand TVS is likely to grow ahead of in the industry in its domestic as well as in international on new launches and EV segment. However, we have a hold rating with a revised target price of 1110 rupees. Next is on the Sonacom. Sonacom reported numbers which were in line with the street estimates. Sales growth was relatively strong, primarily on account of recovery in key markets like Europe and North American. During the quarter, the company got the order of around 4,200 crores with the increase of EV order book from 64% to 73% in Q3 FY23. Now, currently, order book stands at around 23,000 crores. Significant EV program wins in Q3 along with the introduction of new EV product, that is electronically locking differential for electric SUVs and pickup trucks. We believe Sonacom is likely to be the one of the fastest growing India-based auto ancillary company. Hence, we have built revenue and PAT CAGR of 31% and 38% over next 2 years respectively. We have a buy rating on the stock with a revised price of 661. Supreme Industries. Supreme Industry reported numbers which were above estimates on all front or across the parameters. Company has sold 1,38,362 metric ton of plastic products during Q3, which was 51% growth on a YOY basis. That is same quarter, corresponding quarter last year. However, plastic pipe system business profitability continued to be impacted due to falling PVC prices till November 2022. From December onwards, though it has started moving upwards. Overall sales from value-added products increased to rupees 826 crores, which is growth of 24% during the quarter on a YOY basis. Management has guided capex plan of around 700 crores for 2022-23. We have a hold rating with a target price of 2416. Next is on the Chalet Hotels. Chalet Hotels reported a result which was in line with our estimates on net sales as well as EBITDA front. While one-off item boosted the profitability, which was higher than our forecast. Company has reported best ever operational performance on ADR front, which came at 10,168. Higher occupancy and improved ADR led to 18% sequential growth in revenue part at rupees 6640. Net sales grew by 77%, while EBITDA came at 1135 million, which is higher by 181% on a YOY basis. The net profit was 102 crores compared to a loss last quarter, corresponding quarter last year. Our interaction suggests that inventory addition plan is on track and would be operational in upcoming quarters. We have upgraded the stock to buy from hold with a revised rating with a revised target price of 450. Now on the news basis, the Sonata Software has announced that its current CEO, Mr. Sameer Dheer, has been appointed as the managing director.
He will be replacing Srikar Reddy, who has been elevated as Executive Vice President as a part of succession plan. Samir Dheer has been more than 24 years of industry experience and was the CEO of global markets and the industries at Virtusa, managing $1.6 billion company revenue. So we believe this bodes well for Sonata as it aims to more than double its international business in next 4 years. Lastly, JSW subsidiary JSW Steel Coated Product has entered into an agreement to acquire 31% stake in startup Aina Innovation in home furnishings and decor space for a cash consideration of rupees 6 crore. The purpose for this investment is to explore new avenues to increase the consumption of coated steel products. On the JSW Steel, we have a hold rating with a stock with a target price of 751. That's it from my side. Over to you, Brijesh sir. Good morning, everyone. Welcome. Little bit of more of a news space. Triveni Engineering, the company has posted a consolidation of net profit of rupees 147 crores for the December quarter compared to rupees 130 crores a year ago. Revenue has rose to 1660 crores from 1240 crores a year ago. The board has approved rupees 90 crore capital investment for the sugar business and 100 crores for the power transmission business. Next is on Rail Vikas Nigam. The company has bagged an order worth rupees 38.4 crores from Southern Railway. Ease My Trip Planners. The company has acquired 55% stake in the Queen, a hotel booking marketplace. The deal will enable the company to strengthen its hotel booking channels. TVS Motor, it aims to double its electric two-wheeler sales by March and launch a new range of products from 5 kilowatt to 25 kilowatt to expand its iQube line within the next 12 to 18 months. RBL Bank, a lender in the private sector, has launched a smart deposit program, a flexible term deposit option that allows customers to take advantage of flexible with regular monthly savings and top-up investments. Lastly, on Tata Motors, in the Economic Times, we are read that they are reducing their discount offers on their trucks to protect the margins. So the company has kept the maximum retail price constant, leading to an increase in the effective market operating price.